स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम पहले एक तरीके से ओवरव्यू ले चुके हैं। आज हम इस पर डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आपका ये पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट्स, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। एलिमेंट में आएंगे आपके मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, यानी कि अदर एक्सपेंसेस। स्टूडेंट, मटेरियल इज़ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग, is the main constitution of goods produced. A commodity is produced by changing or by improving or the bringing change, increase or decrease in the material. Student, material भी टू टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल फॉर एग्जांपल के तौर पर वुड फॉर फर्नीचर, शुगर केन फॉर शुगर, आयरन फॉर स्टील, कॉटन फॉर क्लॉथ, ब्रिक, सीमेंट एंड लाइम फॉर बिल्डिंग एक्सेट्रा आर डायरेक्ट मटेरियल्स एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे यूज ऑफ ऑयल फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन, इसके एग्जांपल हैं रफ क्लोथ फॉर क्लीनिंग द मशीन, ब्रश, स्मॉल टूल्स, thread, gum, etc. Labor cost. Labor is an important cost of production, जैसे कि कारपेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग फर्नीचर, और इनडायरेक्ट लेबर का बेस पेबल फॉर फेयरमैन, गेट कीपर एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, रेंट ऑफ मशीन, इक्विपमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके जैसे फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, इसमें नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मीन्स किसी प्रोडक्ट को जब प्रोड्यूस किया जा रहा है उस समय क्या कॉस्ट आ रही है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जैसे आपके सेलीज, इस्टेब्लिशमेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, लीगल फीस, ऑडिटर और बैंक चार्जेस, ये सभी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आते हैं। सेलिंग में आपके बैड डेप्ट है, सेल्स मैनेजर सेल लिए है, शोरूम एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं। और स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी में स्टूडेंट, नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी गुड्स or service is not same. Some expenses are of fixed nature while some are totally variable and few of them are partly fixed or partly variable. On the basis of this nature of the expenses classified into three categories. Number first, fixed cost. Second, variable cost.
थर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल ऑफ ऑल सच एक्सपेंसेस विच रिमेन फिक्स्ड इर्रेस्पेक्टिव of the reduction or increase in the production quantity are called fixed cost. Such expenses are called fixed expenses because they do not increase with the increase in production and do not decrease with the decrease in production. For example, rent taxes, insurance, etc. of the land and building of the factory, office sales and distribution, salary of the manager and other officers of the factory, insurance of machine, lighting of the factory, sales department, expenses आपके branch, office expenses, minimum expenses of the delivery, vehicle etc. are fixed expenses. Variable expenses mean sum total of all those expenses which change with the increase or decrease in the unit of production or service is called variable cost. These expenses change in the direct proportion to the quantity of the production and are therefore called variable cost. Such variable expenses or cost may be related to factory, office sales and distribution. For example, variable cost के power and fuel, carriage inward, cost of machinery operation, postal cost, commission of the sales agent, packaging cost, cost of operation, delivery vehicle etc. are variable expenses. Number 3 is semi variable cost. Total of all those expenses which increase or decrease according to increase or decrease in the proportion but not in proportion to the production unit are called semi variable cost. These expenses are neither completely fixed nor completely variable. The amount of such expenses increase with the increase in quantity of production but not in proportion to the increase in production unit. Sometimes these expenses remain constant up to a fixed limit. After that they become fully variable. For example, indirect labor, telephone expenses, repair and maintenance of machinery, electric power, depreciation of machinery are some examples of semi-variable. Next D, on the basis of controllability. इसमें नंबर फर्स्ट आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. Controllable costs are those costs which are under the control of managerial person of the concern. These costs are generally all direct costs such as direct material, direct labor and direct expenses. These costs are controlled by the factory or production department, step by keeping strictly and timely supervision of production activities. Uncontrollable costs include such costs also which are fixed or which are vary as per the operation of law under the pressure of circumstances. Fixed costs are not controllable. Similarly, managerial remuneration, rent of building, salaries of permanent staff are also not controllable. These costs shall remain there irrespective of every efforts of the managerial personnel. Next आता है स्टूडेंट on the basis of normality. Under this, the costs are classified normal cost and abnormal cost. Normal cost is the cost which is incurred in normal working condition.
At a given level of production or output, normal cost is a part of cost of production. ये normal cost of production का part है. Abnormal cost on the other hand is the cost which is not incurred in normal working condition at a given level of output. It occurs due to carelessness or negligence on the part of the staff, whether at lower level at a higher level. This loss is also called as abnormal cost. जैसे some loss is incurred due to inefficiency or ignorance of the workers and managerial personnel. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें स्टूडेंट्स अंडर दिस कैटेगरी कॉस्ट आर क्लासिफाइड बजटरी कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट. बजटरी कॉस्ट is the sum of the estimated expenditure for different activities of the production such as purchase, manufacturing expenses, administrative expenses and selling and distribution expenses. A budget estimated is prepared for these expenditure. Sum of these budget expenditure is called budgetary cost. Standard cost is also predetermined or budgeted cost, but standard cost is ascertained on the basis of technical estimate for the various item of cost. A standard is fixed or material, labor and overheads. Such standards are made very carefully by making technical estimate. Various studies are conducted for determining standard labor cost such as time and motion study. Study of incentive plans, success of incentive plans. Such studies are made on the basis of certain working condition, looking towards the atmosphere, working time, facilities and working environment, etc. Student, last है on the basis of marginal decision. See, such as marginal cost, shutdown cost, differential cost, cash cost, imputed cost और replacement cost, incidental cost, conversion cost, opportunity cost. स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. थैंक यू स्टूडेंट.